Welcome, dear learners, to the FaroFocus, where guidance and precision leads to your growth. In this NEET biology series, I am your biology educator और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जूलॉजी के चैप्टर 1 को, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। NCERT क्लास 12 की बुक में दूसरा चैप्टर आपको ये देखने को मिल जाएगा और ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यू विल बी सीइंग each year multiple questions coming out of this chapter in the NEET examination. Like 3 to 4 questions I shall say are coming each year since the last 15 years of NEET question papers are analyzed. So it is very important that you learn this chapter very appropriately. You must be crystal clear with the concept so that any kind of question comes before you, approach it with proper logics to get the answer, and you will be rewarded with +4, and those are really very important in NEET examination. So without wasting time, let us begin with the chapter human reproduction. और students, reproduction chapter को जब हम शुरू करते हैं तो we must be able to define what actually is reproduction. तो reproduction नाम में काफ़ी clarity है कि we are going to produce something again. What is being produced again? So living organisms are producing young ones of their own kind. So in simple terms, we can define it as a biological process in which living organisms, very important student, एक ऐसी biological process जिसमें living organisms produce करते हैं young ones of their own kind. Okay, they are producing what? Young ones of their own kind. उसे हम कहते हैं क्या? Reproduction. And why organisms reproduce? What is the need for reproduction? So it is but obvious that every organism wants its species to remain on this planet Earth for eternity. And to serve this purpose, उन्हें कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि उनकी स्पीशीज़ कभी एक्सटिंक्ट ना हो और धरती के ऊपर अनंत तक बनी रहे. सो वी कैन सिंपली से टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है. इवन इफ आई रिमेंबर यू, or I should say if I let you recall what I have taught you even before, that a question if comes to you, that what is the purpose of any living organism on this earth, you simply say feed and breed. So that is what we are talking of now. Animals or any kind of living organism, if at all I say, they just feed or gain nutrition to become reproductively mature, and once they are reproductively mature, they will reproduce, leave their progeny on earth, and now they can die in peace. Even human beings are doing the same purpose. Apart from this, whatever else the human being does is just to serve this purpose only. You may think and you may really find that what am I saying is exactly the truth. So let's move forward. अगर हम रिप्रोडक्शन अब जान चुके हैं कि ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए है, तो अब एक और बात आती है सामने. व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. सो बेसिक टाइप्स दैट यू सी आर 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यू से इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो 2 तरीके का रिप्रोडक्शन हो गया. एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दोनों में अंतर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं दे गिव राइज टू व्हाट? यंग वंस. सोमैटिक सेल से ही यंग वंस बनते हुए आपको दिखाई देंगे. देयर इज नो गेमेटिक सेल लाइक दैट इन देम. सोमैटिक सेल से ही यंग वंस बनेंगे. दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. whereas in case of sexual reproduction you will find gametes, और गैमीट्स में होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट फिर अल्टीमेटली ग्रो और डिफ्रेंशिएट करेगा टू बिकम द यंग वन. दैट्स इट इज व्हाट द प्रोसेस ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
So very clearly we can see कि sexual reproduction में fertilization is the key event, whereas in asexual reproduction such an event like fertilization is not observed. One more important difference that people do come to say, and very often I am also writing it, asexual reproduction usually कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है. एक ही पेरेंट से जो है आप यंग वंस बनते हुए देखते हो. जैसे अगर मैं कहूँ एक बैक्टीरिया है, वो फिशन करेगा, फिशन करके 2 और बैक्टीरिया बनाएगा. दैट इज़ व्हाट asexual reproduction. एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था. सिमिलर फिशन you also see in case of amoeba. Like if I say you, let me tell you how does amoeba reproduce. So let us assume this is an amoeba, और इसमें क्या होगा, फिशन होगा, तो 2 डॉटर अमीबे बनेंगे. लाइक दिस. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई देती है. बट अगर मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें तो क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? सो यस, आई विल से वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं. जैसे बडिंग की प्रोसेस आपने सुन रखी है, जैसे आपने फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस सुन रखी है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन एक प्रोसेस के तौर पर आप देखते हो. सो यू सी मल्टीपल काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब की जाती है इसी पैरामीटर्स पर, अगर हम उन्हें भी कंपेयर करें, सो व्हाट यू फाइंड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली बाईपेरेंटल होता है. अब मोस्टली बाईपेरेंटल डज नॉट मीन कि हमेशा बाईपेरेंटल होता है. देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स अवेलेबल विद अस विच शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे आर यूनिपेरेंटल. लाइक इफ आई कोट tapeworm, a platyhelminth, इट इज़ अ मोनोइशियस एनिमल. मोनोइशियस माने इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल बॉडी में मौजूद है. मेल और फीमेल गैमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा. दिस tapeworm शोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. खुद ही स्पर्म्स बनाएगा, खुद ही के ओवा को फर्टिलाइज कर देगा. सो डिड यू सी एनी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व? नो. इट शोज ओनली 1 पेरेंट involved in the process of sexual reproduction. So there are some examples available with us where sexual reproduction can be uniparental. That is why we say it is mostly biparental, and in some kinds it may be uniparental as well. So this was about the difference, basic difference between sexual and asexual reproduction, the very simple things that I have taught you. Now I have a question before you people. Which is more advanced, sexual or asexual reproduction? Which is more advanced? कौन सा ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि ज़्यादा एडवांस्ड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? सो मैनी ऑफ यू विल बी आंसरिंग दैट सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस्ड and not asexual reproduction. I will also agree with what you say, but the biggest question is why sexual reproduction is more advanced as compared to asexual reproduction. So you see, sexual reproduction is more advanced, I say, and you also say, and many others will also say. The question is why? So the answer to this why is that because in sexual reproduction, very important, in sexual reproduction, crossing overs occurs during meiotic process. And where does meiosis comes here? In the process of formation of gametes. So we can write process of gamete formation. Process of gamete formation involves what? Meiosis. Okay. And meiosis is characterized by the process of crossing over. Meiosis is characterized by crossing over. And this crossing over generates variations, which generates what? Variations. So what you will observe, students, that these variations are extremely important, because you will be knowing it from even before many classes that variations are the basis, or I should say raw material for evolution. So sexual reproduction जो है उससे variations आते हैं, और variations के कारण evolution हो सकता है, and that can allow for a better survival advantage. It can allow for
एडेप्टिव एडवांटेज, और जिनके पास एडेप्टिव एडवांटेज होता है दे आर मोर easily to survive in a changing environment. So sexual reproduction survival advantage देता है just because it can introduce variations. इसीलिए sexual reproduction is considered a more advanced form in comparison to asexual reproduction. और यहाँ पर एक और बात आ जाती है सामने. In asexual reproduction you see what? In asexual reproduction the progeny was what? Progeny was identical to the parent, was identical or clone of parent in terms of genetics, in terms of physical appearance. In every sense it was identical to the parent. Whereas in case of sexual reproduction you will see कि यहाँ progeny जो होती है it is similar. Progeny is what? Similar to the parent but not identical. Similar but not identical to the parent. और ये similar क्यों है? क्योंकि जीन्स तो अल्टीमेटली पेरेंट्स के ही आने वाले हैं प्रोजेनी में. वो बात अलग है, थोड़े से वेरिएशंस आ गए. आइडेंटिकल इसलिए नहीं क्योंकि वेरिएशंस है अगेन. So this was all about today's lecture where we discussed what actually is reproduction, what are the types of reproduction, asexual and sexual reproduction. You found grave differences between them and you observed that sexual reproduction was more advanced as compared to asexual reproduction just because sexual reproduction introduces variations that forms the basis for evolution, and due to evolution there can be adaptive advantage enhancing survival in a changing environment. In the upcoming lecture we will be focusing on what kind of reproduction is human reproduction, what are the basic features of human reproduction, and then we shall move forward to describing the human reproductive system in case of males and in case of females. Time being, thank you very much everyone. Keep watching, keep learning, and yes, be boosted with confidence as it is very important in a competitive examination. Once again, thank you everyone. Stay motivated.